वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस किया था। इस वीडियो में वी विल डिस्कस फ्रॉम 16 सितंबर टू 30 सितंबर। ये सारे नोट्स आई हैव पोस्टेड इन दी टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच आई हैव अटैच्ड इन द कमेंट सेक्शंस। So let's start. The first news is about the glass ceiling that is happening in the political ecosystem of Jammu and Kashmir. अगर हम political ecosystem की बात करें, the number of women which are contesting from the Jammu and Kashmir for the Jammu and Kashmir Assembly is very less. The total number of seats for the Jammu and Kashmir Assembly will be 90. In 90 seats में 902 candidates are contesting, and out of these 902 candidates only 42 women have got the mandate for the political parties. For example, अगर 100 people are contesting, उसमें only 4 women are given the mandate. आप खुद सोचिए, only 4.6% of the total contesting candidates are women. So this is actually a glass ceiling impact which is happening in the UT of Jammu and Kashmir. अब अगर इसके वेरियस रीजंस को देखें या वेरियस जो भी रीजंस है फॉर द लोअर परफॉर्मेंस और द लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ द विमेन इन द असेंबली इलेक्शंस, वन इज द पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी, सेकेंड इज द कॉन्फ्लिक्ट रिजन एरिया. जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विच इज नॉट गुड in the UT of Jammu and Kashmir, वहाँ पे generally women are being considered vulnerable to the crime, so they are not allowed to step out of their homes. So in that situation also the political representation of the women is very less. The second news is about Justice Tashi Rabistan, which is going to be the next Chief Justice of the Jammu and Kashmir Ladakh High Court. And Supreme Court Collegium has recommended his name, and he was the senior most judge. And one important fact about the Justice, the Honorable Justice Tashi Rabistan, is that he would be the first Chief Justice from the region of Ladakh. The next news is about an issue of the stray dogs, that is the canine menace, which is actually happening in the city of Srinagar. It's being estimated that around 1 lakh stray dogs roam around the streets of Srinagar. अब इसके बहुत सारे reasons हैं why the stray dog population is very high. अगर हम किसी भी species को देखें तो there is a certain prey base and a predator base. एक स्पीशीज को बैलेंस करने के लिए प्रीडेटर बेस भी होना चाहिए, प्रे बेस भी होनी चाहिए. दैट इज उसका फूड भी एफिशिएंट होना चाहिए, और वो जिसके लिए फूड है, फॉर एग्जांपल किसी भी फूड चेन की बात करें, वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर स्टेज जिसके लिए फूड है, वो वाला स्टेज भी प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्ट्रे डॉग्स जो हैं, इनके जो प्रीडेटर्स हैं, अगर ये कम हो जाएंगे तो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएंगी. एट द सेम टाइम अगर स्ट्रे डॉग्स का फीड और फूड इंक्रीज हो जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगी. तो वही रीजंस हैं कि जनरली स्ट्रे डॉग्स जो हैं, दे उनका जो खाना है, द फूड दे फीड ऑन, दे गेट दैट फ्रॉम द गार्बेज, जो कि हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से सिटी में प्रेजेंट है. एंड इट इज बीइंग सेड दैट द सिटी जनरेट्स अराउंड 500 मीट्रिक टन्स ऑफ गार्बेज डेली. और जितना भी ये गार्बेज है, इट्स नॉट बीइंग रिसाइक्लेटेड, इट्स नॉट बीइंग सेग्रीगेटेड, एंड दैट इज व्हाई feral dogs feed on this garbage. And it's being said जैसे 1 lakh poultry birds are being slaughtered, producing around 40,000 kgs of oil. सो ये जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जितनी भी पोल्ट्रीज हैं, दे एक्ट एज अ मेजर फूड फॉर द स्ट्रे डॉग्स. आपने देखा होगा जहाँ पे भी पोल्ट्री शॉप्स हैं, जनरली इन दैट विसिनिटी स्ट्रे डॉग्स आर न्यूमरस इन नंबर्स. And the city lone garbage dumping site is at Achan. Achan is a place where there is a garbage dumping site, and there is no waste treatment plant located in Achan. And what needs to be done, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस को देखें तो there needs to be the sterilization of the stray dogs, and there also needs to be rehabilitation of these dogs in the dog sanctuaries and shelters. The next news is about, it was a interesting article. It was about the potential of dairy, poultry and wool industries in J&K. Currently ये data important है, you have to remember it. Only 2.8% of the produced milk is processed in J&K.
जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन होती भी है इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टिल वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा, इनकम जनरेशन नहीं हो पाएगी. एंड करेंटली देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ द कंसिस्टेंट क्वालिटी इन डेयरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल ग्रेडिंग नहीं होती. अगर आप पूल कर रहे हैं मिल्क बहुत सारी जगहों से, अगर इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं होगी, यू डोंट गेट टू नो विच milk is better for what type of need. For example, जो high quality fat milk होगा है, you can use it in making of ghee, in making of butter. जो कम quality fat milk होगा, you can use it for the direct consumption. So these infrastructure challenges are present in the Kashmir Valley. That is why we are not able to harness the huge potential, huge milk potential in the valley itself. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं. फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अंडर द स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें around 100% of the grant and aid up to 20 lakhs is for the vehicle procurement अगर FPOs procure कर रहे हैं. And also there is an integrated dairy development scheme that offers 50% of the subsidies to the individuals. There is also Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises. नाउ अगर हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी स्ट्रे डॉग्स की, तो यहाँ पे भी वही बात इसने दोबारा से बताई है कि these poultry sectors, if these are being, अगर इसका वैल्यू एडिशन होता है, पोल्ट्री सेक्टर्स में जो रिमेन्स है उनका वैल्यू एडिशन होता है, वेस्टेज को अगर हम कर्व करते हैं तो उससे स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी. एट द सेम टाइम वैल्यू एडेड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में जैसे चिकन कबाब्स है, कांतीज है, दीज आर इम्पोर्टेड डायरेक्टली बाय द रेस्टोरेंट्स. एंड इससे जो है लोकल ऑन्टरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट मिलता है. मटन एंड वूल की बात करें तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप. हमें बहुत ज़्यादा मटन इम्पोर्ट करना पड़ रहा है बिकॉज द डिमांड इज इंक्रीजिंग day by day, because mutton is in a way a dominant food in the valley of Kashmir, and also we need to enhance the local processing capabilities. There's an interesting and a very good news, that is Aru and Tar villages are the winners of India's best tourism village competition. Aru village J&K में है, that is along the Pahalgam side. It is being recognized for adventure tourism, and Tar village is in Ladakh. It has a contribution for responsible tourism. Responsible tourism वो tourism होता है जहाँ पे we employ eco-friendly practices and engage the local community in the tourism initiatives. And this competition is actually the best tourism villages competition. It was launched in 2023 by the Ministry of Tourism to spotlight that villages that excel in preserving and promoting the natural and cultural assets. So ये दो villages को you can use as a case study and quote in your interview answers also. There is an initiative. This initiative is also part of the government's mission to highlight the soul of India. The soul of India is actually, this is related to rural tourism, which soul of India is actually जो actual soul of India है, which is found in the rural India. So इस theme पे in competitions को held किया जाता है. Now there was a news about the dying traditional wicker craft gets new lease of life. It's also known as Kani Kam, and there is a demand of wicker items for the marriage ceremonies. ये wicker items, these are actually made from the willow woods. इन विलो ट्विग्स को मार्शी एरिया से निकाला जाता है, इनको फिर सुखाया जाता है और इनको फिर वाइंड करके बास्केट्स वगैरह बनाई जाती है. और आजकल बहुत सारे वेडिंग्स में इनका बहुत सारा यूज़ है, जिसकी वजह से इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को बूस्ट मिल रहा है. Now there was an article about Sheikhul Alam Rahmatullah Allah. इसमें कुछ facts हैं that can help you. Last time GS mains GS1 mains JKS में question direct आया था about Sheikh Nuruddin Nurani. So you need to be aware about the prominent historical figures of Jammu and Kashmir. So if we talk about Sheikhul Alam, Sheikh Nuruddin Nurani was an epoch-making personality of Valley of Kashmir. He was born in 1377, and his father was Sheikh Salaruddin and his mother was Sandra, were famous for their devoteeness and religious political transitions. He is also called as Alamdar Kashmir, Sheikhul Alam, or Shahnazad among the Kashmiri Pandits. And he founded an indigenous order of Kashmiri Silsila-e Rishiyan.
अगर उनकी contributions की बात करें तो they have worked for the moral upliftment of the society. They have been he was the strong critic of the economic, political and the social inequality, and his literature is also having great contribution towards the local issues. For example, there is a famous prose of Sheikh Nuruddin Nurani Rahmatullah Allah, which says that unposh के लिए one posh. It has उस टाइम पे इन्होंने जो ये प्रोज लिखा था, it says that जब तक forests present है, only then we can have the food. तो उस टाइम पे they had the saints at that time had these environmental consciousness. Now there is a border tourism news related to the Keren sector, and Keren sector is located in at near the Pakistan occupied Kashmir, and it is separated from the Pakistan occupied Kashmir by the river Kashan Ganga, and there is also a temple by the name of Sharda temple, which is located 25 kilometers from this Keren sector, and there is also a demand to establish a tourist corridor across the temple. Keren is believed to have established by Raja Bahadur Khan in 10th century, and there are other important locations also which contribute to the border tourism. For example, Rajaram Mountains, Firkin village and Kheer Bhavani temple of Kupwara. So that is all for the month of September. अगर आपको full September का current affair cover करना है तो you should watch my previous video also. This PDF I will post in the Telegram channel, and the link of which I will attach in the comment sections. Till then, have a good time ahead.